development, what we have been doing in the flatland should also happen here, will not be allowed. And then this Josimath is an example, and let me tell you, Josimath is now quoted, but the whole Himalaya is vulnerable and sensitive. That's all to be understood. Second important is that we should stop intrusion, very aggressive intrusion. We want a development, but the process is to be corrected. If the process of development will be very aggressive, we will have the consequences of this nature. Let me also add here, imagine Josimath would have been 100 years ago a small place here, because the settlement was then at that point of time, because of local skill, local knowledge was the important factor here for the settlement. Most of the villages around, they are not suffering, but the settlement was with that knowledge, that skill. But it became suddenly a big town without ignoring the fact there is a Alaknanda below cutting constantly the toe, heavier the structure, cutting will be very faster. So collective fault I would place it is because the nature does not understand which is the human, not the government, not the non-government. Every human activities, nature consequence comes in, and well, the learning is that the Himalaya and the Prime Minister office has taken cognizance. It's very important. The PMO should seriously understand what Himalaya is, and because I personally see that current Pradhan Mantri Modi ji has a lot of interest on the Himalaya. That is an advantage if he is taking into cognizance. So the Himalayan dialogue should be open. What limitation we should keep in mind? We are not against development, but the process of development. That well, immediate relief must immediately go to the people who are victim currently, but without much discussion and khichataani. The second important is we should stop aggressive development process around Josimath and elsewhere also. The third, even more important, there has to be town planning mechanism. Many towns may be crossing the limit, I'm quite sure, but we do not know. That should be now immediately taken in the notice, and there has to be discussion and dialogue on this subject. देश को हवा मिट्टी पानी देता है, और इसके प्रति अगर हमारी गंभीरताएं नहीं होंगी तो आने वाले समय में और बड़े दुष्परिणाम मात्र हिमालय के लोगों को नहीं, पूरे देश को झेलना पड़ेगा। आज बिजली पैदा करने के नाम पर या पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों को अवरुद्ध किया जा रहा है, और लोगों के घरों में जो सुरंग निकल गई है, और यहाँ के लोगों को बिजली नसीब नहीं, पानी नसीब नहीं। पहले लोगों को रोजगार के लिए जाना पड़ा, आज लोगों को घरों में दरार पड़ने के कारण जो है अपना जो घर छोड़ने पड़े और रात लोग सड़कों पे काट रहे हैं। नीतिकारों और नीति की कमी है, ये एक समझ की कमी है। मत भूलिए मित्र कि दिल्ली के लोग पूरा कुमाऊं गढ़वाल में ज़मीनें खरीद रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें प्रकृति चाहिए, क्योंकि उन पर पैसा है, और हमें पैसा चाहिए इसलिए हम यहाँ से छोड़ के जाते हैं। तो अभी सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है? हमारे को विकेंद्रित होना पड़ेगा। बहुत ढेर सारे स्थानीय रोजगार, स्थानीय नीति और स्थायित्व, जो ये घटना है, इस तरह की चीज़ों से उठ करके एक सामूहिक हिमालय नीति पर, जिसमें ये सारे सवाल जो आप खड़े कर रहे हैं वो एक साथ जोड़ कर देखे जाएंगे, तो शायद हम कई सॉल्यूशन की तरफ जा पाएंगे। धन्यवाद।